Hi and a very good evening, viewers. You are watching Sansad Television with me, Rashika Gangwani, and this is House Highlights, where we get you the updates from both houses of the Parliament. Here are the headlines of the first day of the monsoon session of 2022. Presidential election concludes. Prime Minister, his cabinet colleagues and members of Parliament cast votes in Parliament House complex. Voting in state legislative assemblies. Counting of votes on July 21st. NDA candidate Jagdeep Dhankar files papers for vice presidential election with senior NDA leaders and Prime Minister in attendance. Margaret Alva is the opposition candidate. Monsoon session of Parliament begins. 28 newly elected members in Rajya Sabha and 4 in Lok Sabha took oath. Proceedings of both houses adjourned till Tuesday due to disruptions. Voting to elect the new President of India concluded on Monday. NDA candidate Draupadi Murmu is facing opposition candidate Yashwant Sinha in the presidential election. Returning officer PC Modi said 728 out of 736 eligible electors cast their votes at the Parliament House today. These included 719 MPs and 9 MLAs. Across the state assemblies, out of a total of 4,796 electors, over 99% cast their votes. 100% voting has been reported from 11 states and union territories of Puducherry. Prime Minister Narendra Modi was the first to cast his vote. Many union ministers and MPs also cast their vote to elect the next president of the country. Senior opposition leaders, including Congress President Sonia Gandhi, cast their vote. Former Prime Minister Manmohan Singh and veteran Samajwadi Party leader Mulayam Singh Yadav arrived in wheelchair to cast their votes. The term of office of President Ramnath Kovind is ending on 24th of July. Counting of votes will be held on July 21. 721 members of Parliament and 9 members of Legislative Assemblies cast their votes before closure of the poll, that is 5 p.m. The total elector turnout at Parliament House, New Delhi was accordingly 99.18%. The counting of votes will take place in room number 63, first floor, Parliament House on Thursday, the 21st of July 2022 from 11 a.m. onwards. NDA vice presidential candidate and former West Bengal Governor Jagdeep Dhankar filed his nomination on Monday. Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Rajnath Singh, Nitin Gadkari and senior NDA leaders were present at his nomination. Calling it a historic opportunity, Dhankar said that he will always strive to enhance the democratic values of the country. Prime Minister Narendra Modi expressed confidence that Dhankar will be an excellent and inspiring vice president. The opposition has named Margaret Alva as its candidate for the vice presidential election. भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन मानता हूं कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया है. Now news from the upper house of the Parliament. Monsoon session of Parliament began amid noisy scenes on Monday with the opposition demanding discussion on issues ranging from price rise to the Agnipath scheme. Presiding over the last session at the close of his tenure, Rajya Sabha Chairman M. Naidu on Monday urged MPs to be different and better than they were in the last 5 years, when 57% of House sittings were partly or fully disrupted. Naidu said this is the last session in the 75th year of independence and MPs should give their best performance to make it a memorable one. Chairman Naidu's 5-year term as Vice President of India ends on 10th of August. Since my assumption of office 5 years ago, we have so far gathered together for 13 full sessions, and this is the 14th such session. This journey of 5 years has been a quite learning experience for me. Dealing with about 245 members of this August House from over 30 political parties with different minds, inclinations and political ideologies is quite revealing and even a testing experience. I try to do the best of my ability to draw the best out of all of you, and as a corrective effort since the
underlining unifying force was the interest of the nation and fulfill the aspirations of the people and also the federal interest of the states. During the last 13 sessions, 141 of the 248 scheduled full sittings, accounting to 57% of the total sittings, were disrupted partly or fully. All of you would agree that this could have been better given our mission for the nation. This is the last session in the 75th year of our hard-fought independence and is being celebrated across the country. As in the case of all the last 13 sessions that I preside over, I would like to fervently appeal to all of you to give out your best performance to make this session a memorable one, particularly in the context of its significance. I expect this session to set the right tone for functioning of this august House over the next 25 years of Amrit Kal, which is critical period to take India to entirely new plane by the time our nation rejoices the centenary of its independence. Even as the chairman was making his remarks, opposition members from Congress, AAP and others raised protest on price rise and GST hike. MPs from Left, DMK, Shiv Sena, RJD, NCP and others also joined in. Amid din, the House was adjourned for the day. On the resignation of Dr. Manik Saha with effect from 4th of July 2022. As some people have come determined not to allow the House to function and also enable the members to go and vote in the presidential election, I am adjourning the House for the day. Earlier, when the House met in the morning, Chairman M. Venkaiah Naidu announced Union Minister Piyush Goyal's appointment as the leader of the House. The Union Minister has been leader of the Rajya Sabha since 2021. After his term as Rajya Sabha MP ended in April, he was re-elected to the House from Maharashtra. He took oath on July 8th as one of the 27 newly elected members of the upper house. I have to inform members that I have received a communication from the Minister of Parliamentary Affairs informing me that Sri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, have been appointed the leader of the House in Rajya Sabha by the Honorable Prime Minister. The newly elected members from different political parties took oath as Rajya Sabha members on the first day of the monsoon session of Parliament. Last week, 27 of the 57 members elected to the Rajya Sabha during the recent biennial polls took oath owing allegiance to the Constitution. Take a look. Cricketer turned politician Harbhajan Singh, daughter of former Bihar Chief Minister Lalu Prasad Yadav, Misa Bharti, and BCCI Vice President Rajiv Shukla took oath along with nearly 25 other leaders in the upper house on Monday. Others included A. Rao Meena, Vijay Sai Reddy, Khiru Mehto, Shambhala Saran Patel, Ranjit Ranjan, Maharashtra Majhi, Aditya Prasad, Praful Patel, Imran Pratapgarhi, Sanjay Raut, Sashmit Patra, Sandeep Kumar Pathak and Vikramjit Singh Sahani. Randeep Singh Surjewala, P. Chidambaram, Kapil Sibal, R. Girirajan, S. Kalyan Sundaram, KRN Rajesh Kumar, Javed Ali Khan and V. Vijendra Prasad were others among those who took oath. Renowned former athlete P.T. Usha from Kerala and legendary music composer Ilayaraja from Tamil Nadu could not be present in the Rajya Sabha to take the oath. Bureau Report, Sansad TV. The upper house mourned the loss of former members Kishore Kumar Mohanty, Robert Kharshing, K.K. Virappan and Santoor player Pandit Shiv Kumar Sharma. Chairman M. Venkaiah Naidu also read out obituary references to former Prime Minister of Japan Shinzo Abe, former President of the United Arab Emirates Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan and former President of Kenya Mwai Kibaki. Rajya Sabha observed silence as a mark to respect to the departed. His Excellency Sri Shinzo Abe passed away on the 8th of July 2022. Sri Shinzo Abe, a member of the House of Representatives of Japan, was a great champion of Indo-Japan relations and shared a special bond with our Honorable Prime Minister. Under Sri Abe's guidance, India-Japan relations underwent an unprecedented transformation into a comprehensive strategic partnership covering a wide range of areas such as industrial competitiveness, investment promotion, skill development, digital partnership, defense cooperation,
civil nuclear cooperation, space and cyber security. His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan passed away on the 13th of May 2022. Sheikh Khalifa will be remembered and admired for his contribution towards the development of the UAE and strengthening of India-UAE bilateral relationships under his leadership. He took great care of the large Indian community in UAE who held him in high esteem. We will be right back after a short break with more parliamentary news on the other side. जल्द मिलेगा नया संसद भवन। सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के तहत चल रहा है काम। लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाले संसद भवन की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। नया संसद भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर एक नई तस्वीर हमारे बीच होगी। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से अधिक बड़ा, आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं वाला होगा। नए संसद भवन से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बता दें। अगस्त 2019 में मौजूदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की ओर से नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव के मुताबिक नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा। केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र का आयोजन नए संसद भवन में किया जाए। पीएम मोदी ने रखी थी नए संसद भवन की नींव। सौभाग्यं देवमन्त्रे रिपुभय शमनं भार्गव शौर्यमार्किः तावत् त्वयात्र देवेशे स्थातव्यं हितकाम्यया आधारशिलायै नमः। नई बिल्डिंग का डिजाइन HCP डिजाइन मैनेजमेंट ने तैयार किया, जो अहमदाबाद की कंपनी है। भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स कर रही है। नई बिल्डिंग में ऑडियो विजुअल सिस्टम के साथ ही डेटा नेटवर्क फैसिलिटी का ध्यान रखा गया है। नए संसद भवन में कुल 1224 सांसदों के बैठने की सुविधा होगी। इनमें 888 सांसद लोकसभा चैम्बर में बैठ पाएंगे, जबकि राज्यसभा चैम्बर में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। नई बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। लोकसभा चैम्बर में ही दोनों सदनों के सांसद बैठ सकेंगे। नए भवन में एक भव्य संविधान कक्ष होगा। उम्मीद है कि नए संसद भवन का निर्माण इस साल के अंत तक या 2023 की शुरुआत तक पूरा हो जाएगा। इसी कड़ी में एक यादगार पल का गवाह पूरा देश बना, जब 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर कांस्य में ढले राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। पूरे देश के लिए ये सचमुच एक ऐतिहासिक लम्हा रहा। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने नया संसद भवन बना रहे कर्मियों से भी मुलाकात की। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है। संसद भवन पर बने नए अशोक स्तंभ की ऊंचाई 6.5 मीटर है और इसका वजन 9,500 किलोग्राम है। इस प्रतीक को नए संसद भवन के केंद्रीय फॉयर के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक को सपोर्ट देने के लिए 6,500 किलोग्राम का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसे भारतीय कारीगरों ने पूरी तरह हाथ से तैयार किया है। ये मॉडल अशोक स्तंभ का प्रतिरूप है, जिसे सारनाथ के लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक से लिया गया है। Welcome back after the break. You're watching House Highlights. Now moving on to the Lok Sabha. On the first day of the monsoon session of Parliament on Monday, Lok Sabha proceedings were adjourned for the day amid opposition uproar over the issue of price rise and Agnipat scheme. As soon as the Lok Sabha met for the day, it was adjourned till 2 p.m. due to the ongoing polling to elect the new president of the country. Speaker Om Birla said that voting is a festival and the House proceedings will resume afterwards.
Adding that members should participate in the festival, the Speaker adjourned the House till 2 p.m. As the House reconvened for the afternoon session at 2 p.m., opposition members trooped into the well raising slogans. Amid protest, BJP member Rajendra Agarwal, who was in the chair, allowed laying of parliamentary papers on the table of the House. Law Minister Kiran Rijiju introduced the Family Courts Amendment Bill. As opposition members raised slogans in the well, the chair adjourned the proceedings for the day. सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 19 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. Meanwhile, 3 newly elected Lok Sabha members, Trinamool Congress's MP from Asansol, West Bengal, Shatrughan Sinha, and 2 BJP members from Uttar Pradesh, Dinesh Lal Yadav Nirua and Ghanshyam Singh Lodhi, took oath as the member of Lok Sabha. ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता और अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा. मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो आजमगढ़ लोकसभा से सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा. Earlier, Lok Sabha also paid tribute to former United Arab Emirates President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, former Kenya President Mwai Kibaki, and former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Speaker Om Birla said Abe was assassinated on 8th of July during a campaign rally in Nara City in Japan. Stating that India has lost a true friend, Speaker Om Birla maintained that Abe will always be remembered for his work and excellency. The Speaker also remembered Abe's address in Parliament. श्री आबे भारत एवं जापान के बीच प्रगाढ़ संबंधों के प्रबल समर्थक थे. उनका मानना था कि एशिया के दोनों लोकतांत्रिक देश स्वाभाविक मित्र हैं तथा दोनों देशों के बीच संबंधों का दायरा अत्यंत व्यापक होना चाहिए. यही कारण था कि उनके नेतृत्व में भारत जापान संबंध आर्थिक साझेदारी एवं सहयोग से आगे बढ़कर एक व्यापक सामरिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए, जिसमें औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, निवेश संवर्धन, कौशल विकास, डिजिटल साझेदारी, रक्षा व असैन्य परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है. उनके नेतृत्व में दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय महत्व के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा भी एक नया बल मिला है. उनके मार्गदर्शन में एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्क को नया आयाम मिला है. Om Birla, on behalf of the Lok Sabha, also honored the former President of the United Arab Emirates, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, and the third President of Kenya, Mwai Kibaki. मुझे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नयान के 13 मई 2022 को हुए निधन के बारे में सभा को सूचित करना है. महामहिम शेख खलीफा को संयुक्त अरब अमीरात के विकास और उनके नेतृत्व में भारत संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में उनके योगदान के लिए सदैव याद किया जाएगा.
उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में बसे विशाल भारतीय समुदाय के हितों का संरक्षण किया। इसी कारण उन्हें वहाँ निवास कर रहे भारतीय समुदाय का भरपूर आदर और सम्मान मिला है। मुझे अत्यंत दुख के साथ केन्या के राष्ट्रपति श्री मवाई किबाकी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। भारत श्री किबाकी को एक ऐसे महान राजनेता के रूप में याद करता है जिन्होंने भारत केन्या संबंधों को और घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बनाने में सही योगदान दिया। ये सभा श्री मवाई किबाकी के निधन पर शोक व्यक्त करती है। Lok Sabha Speaker Om Birla also read out obituary references of 8 former members of the House who passed away recently. The members observed a 2-minute silence. रविंद्र कुमार राणा बिहार के खगड़िया संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राणा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में तथा 2 कार्यकाल तक के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रविंद्र कुमार राणा का निधन 75 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2022 को नई दिल्ली में हुआ। श्री टी बशीर केरल के चिरा इंकिल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बशीर विभिन्न संसदीय समिति को सदस्य थे। वे 1977 से 1984 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने केरल विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री टी बशीर का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 मार्च 2022 को तिरुवनंतपुरम में हुआ। श्री नवल किशोर राय बिहार के सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री नवल किशोर राय का निधन 62 वर्ष की आयु में 16 अप्रैल 2022 को गाजियाबाद में हुआ। श्री सुखराम हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने खाद्य नागरिक आपूर्ति योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा संचार मंत्रालयों में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में कार्य किया। श्री सुखराम हिमाचल प्रदेश विधानसभा तथा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद के सदस्य भी रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान किए। श्री सुखराम का निधन 94 वर्ष की आयु में 11 मई 2022 को नई दिल्ली में हुआ। श्री हुसैन दलवई महाराष्ट्र के रत्नागिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दलवई राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इससे पहले श्री दलवई महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री हुसैन दलवई का निधन 99 वर्ष की आयु में 16 मई 2022 को मुंबई में हुआ। श्री शिवाजी पटनायक ओडिशा के भुवनेश्वर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पटनायक विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री शिवाजी पटनायक का निधन 90 वर्ष की आयु में 23 मई 2022 को भुवनेश्वर में हुआ। श्री चक्रधारी सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़ के सरगुजा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चक्रधारी सिंह का निधन 83 वर्ष की आयु में 31 मई 2022 को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुआ। श्री हरिवंश साय उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री साय उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री हरवंश शाह का निधन 82 वर्ष की आयु में 9 जून 2022 को नोएडा गौतम बुद्ध नगर में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। That's all we have in today's bulletin. For daily updates of the House, keep watching Sansad Television. Good night.